So let's start with the cell wall. Now the discovery of the cell wall is credited to the Robert Hooke when he observed the thin slice of cork under his own designed microscope. So here we can write this: discovery of cell wall was by the Robert Hooke. Now the cell wall is a rigid protective covering which is present in the plants, in the prokaryotes, fungi, as well as also seen in the several protists. So here I will be writing the occurrence of the cell wall. The occurrence is in the plants, fungi, majority of prokaryotes, as well as in the protist. Yes, so several protists also the cell wall is present, but there are certain cells in which the cell wall is absent. In organisms के अंदर कुछ cells है जहां पर cell wall absent है, like the cell wall is generally absent in the gametes. The cell wall is absent in the zoospores. So zoospores, you know, they are the motile spores, the motile structures. Gametes and zoospore जिनके आसपास cell wall absent है. Now these structures, they are known as gymnogametes or gymnozoospores. Yes, अगर cell wall absent होगी तो क्या word हमने यहाँ पर use करना है? Gymno. Gymno means naked. तो अगर gametes के आसपास cell wall absent है तो आप कहेंगे gymnogametes. Zoospore के आसपास cell wall absent है तो gymnozoospores. So these two structures, these two cells, they are without the cell wall. Now coming to the thickness. The thickness of the cell wall, it shows variation. It varies from 0.1 mm to 10 millimeter. Now in the cell wall, first of all, I will be starting with the components. Yes, what is the composition of the cell wall? Cell wall के अंदर 3 components present है. 3 main components. One is the matrix, then microfibrils, and the third one, that is the depositions, which can be present or can be absent. So these 3 components which are associated with the cell wall. Now I will be dealing with these components in little bit of detail. So let's start with the first component, that is matrix. Now matrix, it is a jelly-like ground substance. So it is jelly-like substance, और इस jelly-like substance के अंदर जो major component एक present है, that is water. So one of the major component of the matrix is water, and the amount of the water which is present, that is 30 to 60%. Right? Now the next component present in the matrix, that is hemicellulose. Now this hemicellulose, it is a polysaccharide. Yes. So this is a polysaccharide. So what is a polysaccharide? It is a
polymer of monosaccharides. Yes, it is a polymer of sugars. So polymer of monosaccharide, where the number of the monosaccharides, they are more than 10. मोनोसेक्राइड्स का नंबर अगर 10 से ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड, और इस पॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोमर्स प्रेजेंट है दैट इज galactose, arabinose, mannose and xylose. तो इस पॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोमर्स प्रेजेंट है दे आर डिफरेंट. If the monomers they are different, so this polysaccharide, it can simply be known as heteropolysaccharide because of the presence of the different types of the monomers and the percentage of the hemicellulose which is associated with the cell wall, that is 5 to 15%. Now after the hemicellulose, now coming to the next component in the matrix, that is pectin. Pectin, again it is a polysaccharide which is made up of the different monosaccharides, so it is a hetero one. Yes, so again it is heteropolysaccharide. इस हेटेरोपॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोमर्स प्रेजेंट है, जो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है, वन इज galactose, another one arabinose, and the one which is present in the ample amount, abundant concentration, that is galacturonic acid. Now coming to the next component, but before writing the next component, I will be writing the percentage of the pectin in the matrix. The percentage is 2 to 8%. And the next component, that is lipids. The percentage of the lipids is 0.5 to 3%. Another one, that is proteins. That is 1 to 2%. So these are the different components of the matrix. Now after the matrix, now coming to the next part of the cell wall, that is microfibrils. The percentage of the microfibrils present in the cell wall, that is 20 to 40%. Now in the case of the plants के अंदर जो microfibrils present है, they are composed of cellulose, and in the case of the fungi जो microfibrils present है, they are composed of fungal cellulose, and that fungal cellulose is known as chitin. जैसे मैंने अभी बताया, hemicellulose and pectin, they are heteropolysaccharide, but this cellulose, it is a homopolysaccharide. होमोपॉलीसेक्राइड है, जो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है यहां पर, दैट इज सेम. एंड व्हाट इज दैट मोनोसेक्राइड? दैट इज ग्लूकोज. सो वी कैन इजीली से हियर दैट सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ मोनोमर, दैट इज ग्लूकोज. अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ना, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल वॉल. यस, they are structural elements. These are the structural elements, so they will be providing the rigidity to cell wall.
ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे और यू कैन से दैट दी सेलुलोज फाइब्रिल्स दे आर स्टील बार्स ऑफ सेल वॉल, right? So after the microfibrils, now coming to the last component which can be present or can be absent in the cell wall, that is the depositions. Now the depositions. Depositions in the cell wall can be absent or maximally can be present in 25% of the amount. Now the one of the deposition associated with the cell wall, that is of lignin. Lignin deposition is generally associated with the sclerenchyma. Sclerenchyma cells and the cells of xylem like tracheids, vessels, as well as fibers. Now this lignin, it is a non-polysaccharide dietary fiber. Yes, अब ये non-polysaccharide compound है, and this lignin is going to provide the hardness, stiffness to these components which are present in the plant. So they are responsible for the hardness, stiffness of the cell wall. Now after the lignin, the another deposition which can be associated with the cell wall, that is superin. Now the superin deposition we have studied in the Koch cells. So when we were discussing the anatomy, you know that in the extracellular region, secondary growth occurs with the help of the cork cambium, and the cork cambium towards the outer side, it cuts the cells, and these thick cells, they are known as Koch cells. तो कॉक सेल्स के अंदर किसका डिपोजिशन है? सुब्रिन का. इसके अलावा इन दी एंडोडर्मिस यू नो देयर इज प्रेजेंस ऑफ थिकनिंग्स. एंडोडर्मिस में थिकनिंग्स प्रेजेंट है, एंड दीज थिकनिंग्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ दी स्ट्रिप्स, एंड दी स्ट्रिप्स आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो कैस्ट्रेरियन स्ट्रिप्स के अंदर एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज सुब्रिन. सुब्रिन इज अ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस. इट इज अ फैटी सब्सटेंस विच इज हाइड्रोफोबिक. So one of the function of this substance is that it prevents water loss, or you can say reduce water loss from the body of the organism. तो ये जो सुब्रिन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट डिपोजिशन, दैट इज क्यूटिन. Cutin is a waxy substance. It is a fatty substance which is again hydrophobic. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल्स के ऊपर. सो इट्स वेरी वेल नोन टू यू दैट ओवर द लीफ सरफेस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है एक वैक्सी लेयर that is formed by cutin, and this waxy layer which is formed by the cutin, it is known as cuticle. अब ये cuticle है, ये हाइड्रोफोबिक है, so again one function performed by the cuticle, it will reduce the water loss from the leaf. So water loss from the leaf is reduced. Next one, that is silica. Silica is associated with grasses. Along with that, one of the pteridophyte,
the name I am writing here, that is equisetum. This silica, it will give the protection. एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और दूसरा इट विल प्रोवाइड दी हार्डनेस, स्टिफनेस. तो ग्रासेस के अंदर जब सिलिका की एक्यूमुलेशन होती है, सो दीज ग्रासेस दे आर नॉट लाइक्ड बाय द एनिमल्स, सो द सिलिका विल प्रोटेक्ट द ग्रासेस फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स. यस, the protection from the grazing animals as well as provide the hardness, stiffness. Now the next one, the deposition can also be of calcium, can be of iron. Calcium iron deposition is seen in Chara. You know that Chara is one of the advanced green alga in which there is presence of multicellular and jacketed sex organs. So this is all about the different components which are associated with the cell wall. Now I will be discussing the different layers of cell wall. So let's start with the layers in cell wall. Cell wall के अंदर जो layers present हैं, that is middle lamella, primary wall, and secondary wall. So first of all, let's start with the middle lamella. In the plant cell, दो adjacent cells को जोड़ने के लिए जो लेयर हेल्प करती है, that layer is middle lamella. तो middle lamella दो adjacent cells को join करती है. That's why this middle lamella, it is also known as cementing layer. It is helping in joining of two adjacent cells. That's why it is known as cementing layer. ये जो सीमेंटिंग लेयर है, अब देखिए इसकी कॉम्पोजिशन क्या है. इस सीमेंटिंग लेयर के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम पैक्टेट. Along with that, there is presence of magnesium pactate, but the content of the calcium pactate is more as compared to the magnesium one. Now this cementing layer, it is the first formed structure during the cytokinesis of the plant cell. जब प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, दो डॉटर सेल बनते हैं, तो जो पहला स्ट्रक्चर साइटोकाइनेसिस के टाइम पर बनेगा ऑफ द सेल वॉल, दैट इज द मिडल लैमेला. सो प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन. ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, first structure of cell wall, first part of cell wall which is formed, that is middle lamella, and this middle lamella is formed by cell plate, and this cell plate in turn is formed by the GBs. Yes, तो middle lamella किससे बनेगा? Cell plate से. Or this cell plate is formed by the GBs, that is the Golgi bodies. Now the detail about the cell plate and the Golgi bodies we will discuss in the proceeding part of the chapter, coming part of the lecture. Now another one, जब हम मार्केट से फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो कुछ दिनों के लिए ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये फ्रेश रहते हैं. But after certain time duration, they start showing ripening, they start showing softening. अब ये जो फ्रूट की softening हो रही है, ripening हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? This is due to the dissolution of the cementing layer. Dissolution of the cementing layer, that is the middle lamella.
So fruits, they ripe due to the dissolution of pactate present in the middle lamella. And the enzyme which is involved in the dissolution of the middle lamella, the name of the enzyme is PGU. Yes, the full form for this is polygalactosuronase. Right? So after the middle lamella, let's see what is there in the next layer, that is the primary wall. तो बीच में मिडल लैमेला है और इस तरफ दोनों सेल्स के अंदर जो लेयर बनेगी, दैट इज द प्राइमरी वॉल. सो लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लेयर. सो दिस इज मिडल लैमेला, cementing layer between the two cells. तो दो सेल्स के बीच में ये मैंने सीमेंटिंग लेयर फॉर्म करी है. अब मिडल लैमेला की इनर साइड पर बनेगी प्राइमरी वॉल. सो लेट्स से दिस इज प्राइमरी वॉल ऑफ दिस सेल, राइट, एंड दिस इज प्राइमरी वॉल ऑफ दिस सेल. तो ये दो सेल्स है. दिस इज प्राइमरी वॉल ऑफ दिस सेल एंड दिस इज फॉर सेकेंड सेल. तो मैं सेल्स के अंदर डिटेल स्ट्रक्चर नहीं दिखा रही हूं, यहां पर सेल वॉल दिखा रही हूं सिर्फ दो सेल्स के बीच में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेजेंट है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. बट जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है उनका कंटेंट कम है. एंड यू कैन इजिली सी हियर दैट दी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर वेवी, short, wavy, and they are loosely arranged. These are the feature associated with the primary wall. So let's write all these features. प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज का जो कंटेंट है वो कम है. द परसेंटेज ऑफ द सेलुलोज विच इज प्रेजेंट, दैट इज ओनली 20%. जो सेलुलोज फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, माइक्रोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट है, दीज माइक्रोफाइब्रिल्स, दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर वेवी, and they are loosely packed. Now let's see what is the condition with respect to the secondary wall. Secondary wall is present inner to the primary wall. Yes, inner to the primary wall there is presence of secondary wall. So I am forming the secondary wall of this cell. And this is the secondary wall for the adjacent cell. सेकेंडरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसका कंटेंट ज्यादा है. एंड नाउ द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स विच आर प्रेजेंट, दे आर longer and you can see here they are straight and compactly arranged.
तो सेकेंडरी वॉल के अंदर सेलुलोज कंटेंट ज्यादा, that is 40%. So as you can see here, the cellulose fibrils, they are long, now they are straight and tightly packed, right? Now the next difference between the primary and secondary wall. In the primary wall, the content of hemicellulose, lipids and proteins is high. Secondary wall के अंदर the content is comparatively lesser as compared to the primary wall. Primary wall के अंदर the deposition like lignin, yes, deposition like lignin is totally absent. Secondary wall के अंदर these deposition can be present which will provide the hardness, stiffness. जो प्राइमरी वॉल है इसके अंदर पैक्टिन का कंटेंट ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है. While dealing with the anatomy, I had already discussed that the several important features they are associated with the pectin. One is that it has good hydration capacity. It has good water holding capacity, and secondly, it will provide the elasticity to the cell wall. Yes, pectin has great tensile strength. That is ability to be stretched without any breakage. So this will provide, it will contribute the elasticity to the cell wall. तो पैक्टिन की वजह से जो प्राइमरी वॉल है इसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी है अराउंड 60%, बट सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पैक्टिन का कंटेंट कम है, सो द हाइड्रेशन कैपेसिटी इज 30 to 40%. Now the next one, जो प्राइमरी वॉल है, दिस प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड इन द young cells, growing cells, and the secondary wall, it is formed in the cells which has stopped their growth, which has stopped growing. प्राइमरी वॉल के अंदर सब लेयर का डिस्टिंग्विशमेंट एब्सेंट है. सब लेयर डिस्टिंग्विशमेंट इन द प्राइमरी वॉल इज एब्सेंट. सेकेंडरी वॉल्स के अंदर ये लेयर्स फॉर्म होंगी एंड दीज लेयर्स दे आर नोन एज S1, S2, S3. The number of the layers, they are 3 or more than that. So let's see what are these layers. Now ये मैंने दिखाई है प्राइमरी वॉल, इसके इनर साइड पर ये है सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल की ये है फर्स्ट लेयर. सो दिस फर्स्ट लेयर कैन बी नोन एज S1. अगर इसके इनर साइड पर एक और लेयर बनी देन इट इज S2. One more layer if formed, then this is S3. So the number of the layers can be 3 or more than that. Now, in these layers, you can see what is the condition with respect to the cellulose microfibrils. तो देख रहे हैं कि cellulose microfibrils जो present है वो tightly packed है. Long, they are straight and present in the large amount. Yes, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेलुलोज फाइब्रिल्स की जो कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस नजर आ रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स. तो इन लेयर्स के अंदर द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इज डिफरेंट.
Orientation of the microfibrils is different. तो इन लेयर्स के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रल्स डिफरेंट है, एंड दिस ओरिएंटेशन इट इज डिसाइडेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन्स. यस, यू गॉट दिस? सो वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज ओरिएंटेशन of microfibrils is different. For microfibrils, I am writing MF, and this orientation, it is decided by the glycoproteins. So what are the glycoproteins? Proteins which are having the joining of the oligosaccharide. प्रोटीन्स जिसके साथ शुगर चेन अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द ग्रोथ पैटर्न, हाउ द ग्रोथ विल अकर इन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी वॉल. So first we can see how the growth it will occur in the secondary wall. ये मैंने यहां पर प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिखाया. अब देखिए सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ कैसे होगी. द न्यू मटेरियल इज एडेड, द न्यू मटेरियल, वॉल मटेरियल इज डिपोजिटेड over the pre-existing structure in the form of the layers. तो आप देख रहे हैं कि जो नया सेल वॉल मटेरियल ऐड हो रहा है, that is deposited on the pre-existing structure in the form of the layers. तो अगर वॉल की ग्रोथ होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल ओवर द pre-existing structure, then such type of the growth it is known as accretion growth. So ये growth जो हमने discuss करी, what type of the growth it is? Accretion growth. और accretion growth के अंदर जो new material deposit होगा, that is deposited over the pre-existing structure. Is it okay? So let's see what is the condition with respect to the primary wall. ये मैंने प्री एग्जिस्टिंग वॉल यहां पर बनाया. दिस इज प्री एग्जिस्टिंग वॉल. अब देखिए यहां पर ग्रोथ कैसे होगी. अब जो नया मटेरियल डिपॉजिट होगा वो इस वॉल के ऊपर नहीं होगा. नाउ द न्यू मटेरियल विल बी डिपॉजिट inside the pre-existing wall, pre-existing structure. तो अब जो नया मटेरियल ऐड हो रहा है वो ऊपर नहीं ऐड हो रहा, वो कहां पर ऐड हो रहा है? अंदर. So when the new material it is added within, inside the pre-existing wall, then this type of the growth it is known as into susception type of growth. So this is very much clear. तो accretion के अंदर क्या होगा? New material will be added over the pre-existing structure, and this case within. So here I will be discussing now the last point associated with the cell wall. Now in the cell wall, microfibrils, pectin fibers, and structural proteins, they form three independent networks. तो ये जो तीन फाइबर्स प्रेजेंट है, माइक्रोफाइब्रल्स, प्रोटीन फाइब्रल्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर्स, they form three independent networks in the cell wall. So let's see how these networks they will be formed. Now first of all, here I am making cellulose fibrils. These are cellulose microfibrils.
So you can see the arrangement. These microfibrils, they are arranged in the parallel fashion. तो ये मैंने बना दिए cellulose microfibrils, which I am writing them as MF. अब ये जो microfibrils हैं, they are attached with the hemicellulose present in the matrix with the help of hydrogen bonds. तो ये मैंने दिखाया hemicellulose. Yes, so they are linked with the hemicellulose with the help of hydrogen bonds. So all these structures which I am forming here, they are representing hemicellulose. So, what is this? Hemicellulose. So, after the cellulose microfibril, let's see the second network which is formed by the pectin fibers. Now, the pectin fibers, they are also arranged parallelly. तो ये मैं pectin fibers दिखा रही हूं. Now these pectin fibers, you can see here, they are showing joining among themselves. तो अपने आप में joining show कर रहे हैं और joining के लिए there is involvement of the calcium ions. Along with that, these pectin fibers, they also interact with the hemicellulose. Yes, they show the joining with the hemicellulose also. तो बात समझ आ रही है? ये है cellulose microfibrils. Yes, forming a network in the cell wall, and they are attached with the hemicellulose with the help of the hydrogen bonds. ये मैंने बनाया second network formed by the pectin fibers. ये अपने आप में भी connected है with the help of the calcium ions, and they are also showing the linkage with the hemicellulose. Now after this, now coming to the third network which is formed by the structural proteins. Now suppose यहां पर ये मैंने कुछ cellulose fibrils है, they are the cellulose fibrils, और ये यहां पर pectin fibrils है, right? And now let's say these are the protein fibrils. Now these protein fibers, they will show the interweaving between the pectin and the cellulose fibrils. तो आप देख रहे हैं जो प्रोटीन फाइब्रिल्स हैं, ये आर शोइंग द इंटरवीविंग के बाद ये जो यहां पर स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज रैप एंड वेफ्ट स्ट्रक्चर. सो यू आर गेटिंग दिस. तो जो प्रोटीन फाइबर्स हैं ये शो करेंगे इंटरवीविंग, and after the interweaving, the structure which is formed, yes, that structure is wrap and weft-like structure. So this is all about the arrangement of these three different networks forming wrap and weft-like structure. Is very much clear to all of you. Now in the next class, I will be starting with the plasmodesmata, and along with that, we will be dealing with the structure of the cell membrane in detail. Thank you so much.